Hello Matu Jamir, I'm Yansa Zornbill TV. In a CNIM Pra January 19 day India Sorkarge Kushinapa Junaishe Group K terrorist outfit Matya Nimide. Idu 18 November 2002 Milan, Italy de signed Korea Memorandum of Understanding laga khilaf asikuigina. Idu MOU du India Sorkar pra bhabna kuigina NSCN ge Unlawful Activities Prevention Act noilibi UAPA laga under de ban kuigina rakya hatai dia laga ase. Idu nimide NSCN ge terrorist outfit Matya do thik nohoi kushe. Group pra kushi ki India Sorkar pra kintu MOU respect nakurigina Kilonsir Alamla Jamir kun international law laga hisab te prisoner of war ase taige fair pra treat nakurigina terrorist outfit laga hardcore member koigina ase aro taige 4 sa laga opor jail de thagibule di ase idu India pra naga manu ge submission de anibule bui khilai ase koigina NSCN kushe tai kan ge kitia be submission de anibule na parbo kushe age de group pra India de NSCN logo de deal Korea do thoka digina naga issue opor dunia ge mislead kurubule Korea kushe India Sorkar pra Indo-Myanmar border de free movement regime guideline change kridia opor Tenimia Union Nagaland noilibe TUN pra Sorkar garubi to guideline side bi kushe idu nutun guideline de manukan ge 10 km radius ekla de 7 din nimide hi ahibole paria aro bishi verification kriya pra border de thagya communities kan ge diktar ania kushe union pra puilabi fence bana kushi na pai nishina itu pra communities kan ge alak kuri dia ekla noigina bureaucracy laga rasta bonbi pa naga manukan laga connect thagya jivan ge diktar ani asikushe FMR laga nutun guideline de kamzor thagya group salak noilebi pura buri kankun pura likhya kuriya nai tai kan ge diktar ani ase border pass lobole idu verification process de Assam Rifle State Police aro health officials kan sob logo de jai idu pra manukan ge duk diase aro tai kan ge healthcare education aro local market nishna de jabule diktar diase kushe Tinime Union Nagaland pra Sorkar ke policy RB side dibiko gina age de free movement regime under de 40 kilometers jabule pari thagya niyam do RB hali dibiko gina mangishe aro center ge naga stakeholders kan logude meaningful dialogue logina sob manuge milai gina kunuba ge bujibule khota koribi kushe Zaniboto laga DC Conference Hall de First District Planning and Development Board DP laga meeting do rakishe January moina karne kundu Deputy Commissioner Rahul Banudas Malipra chair kushe meeting do January 20 de lushe kude nutun board members kando introduce krigina welcome kushe DP laga meeting de key discussions to Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi do January 2017 Zuniboto visit kurubali thagya aro sub heads of department HODs kan government schemes laga details de well prepared thagibule Union Minister laga visit homoy meeting the Republic Day celebrations karne kam laga locations to be thoroughly discussed kushe DC Malipa development proposals laga update PDC kude Central Sorkar pra 15 projects approved Kuriado BSA cultural hall aro pending land issue aro waiting state approval kam meeting de Saki one stop center de nutun sanitary vending machine do be announced krishe kundu maiki kan laga empowerment de promote kurble laga aim laga ase DC Malipa sub departments kan ge initiative for support to bule kushe such things are there cultural hall or research center, travel research center, that role is gone. But land is one issue. All of you know that in our district, land is one big issue. Getting land is very difficult. So all the activities departments, land patta should be taken by all of you, all of us. That circular was issued 2 years back. All the government departments should have land patta. If any land is encroached by landowners, you have to inform us. And with our help, we can solve this issue. So last year we looked at our NST depot issue, district hospital, some issues we were able to solve. So together we can tackle this issue. Yeah. From Delhi to they upload all proposals, but here from state government, we should get clearance and all that. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Advisors have been also local people themselves, so you get that information. We will also help. Like today only I called joint director and travel affairs. I got information. Benjamin Nyaptomi Nagaland PJP laga president arbi hobole ase adi Dimapur de thage hotel Saramati pra nomination meeting thage homoy party state unit laga president election nimide Benjamin Nyaptomi ekta lota nomination file korea candidate thagishe idu opor official announcement do Tuesday January 21st state PJP headquarter Kohima pa janai dibole ase. Hornbill TV te yere hotel Saramati Dimapur de ahi gine je yere ahi thaga nishna moila pichire yere banner de dikya nomination of state president BJP laga state president nomination laga aji yere din dikhi paise spokesperson state spokesperson brajanai dia hisab holio khali ekjon hi nomination file kurise guse itu do purana BJP state president Benjamin Nyaptomi ekla file kura nishna obviously tai arubi upcoming tenure de tai hi president kuri gine jawole ase aru tai khan yere unanimously decide kuria laga bi huni paise kali tai ge finally arubi president banawole laga official program do kali state BJP headquarter Kohima re thagibo koi gine jani paise itu laga alawa Hornbill TV bra arubi ekta question hudishe itu ki laga ase koile do recently BJP laga purana leader ekta party chharia laga upor hudishe aru spokesperson pra janai dia hisab hoile do itu party leader itu kun charishe party charishe tai do tai nijor hi tai laga on will pra hi charishe guse aru tai itia jaine dusra party NDPP join kurule laga bi huni pa ase koigena jani paise moi khan itia itula details saine jao. My name is Khavishe Semako, Chief Spokesperson of BJP Nagaland. Very fortunately, there was only one candidature to be filed the nomination for the post of President BJP Nagaland. And that is Mr. Benjamin Nyaptomi. And Mr. Benjamin was, his candidature was proposed by Sir Jacob Jumomi, Honorable Minister for PhD and Cooperation, and other state council members. And the formal declaration program will be held tomorrow at our headquarters, BJP headquarters Kohima. So most probably there is no any candidature other than Sir Benjamin Nyaptomi. So there will be official announcement made by the observer who has come all the way from Delhi. Sir Anil Anthony, he is the Prabari, which is known as state in charge of BJP Nagaland. So he will be there, and the observer, national observer will be there. All the ministers and MLAs of BJP will be there, and state council members, state executive members, and then BJP office bearers, and then district president and all the morcha head will be there tomorrow. So official announcement will be made by the observer, national observer, tomorrow at 9 a.m. Our national observer is V. Mulidharan. Okay. He is the former MOS and now he is looking after the Northeast as well. Northeast co-in-charge. Very old party, one of the leaders leave recently also, and her resignation was also on social media also. So any inside clashes on that or? No, there is no any misunderstanding of clashes as such. That was her own perspective, that was her own decision. So before she joined other parties, she dropped her resignation at our office, so we gracefully accepted her resignation. So you have heard that she'll be joining other parties? Not exactly, but during that press statement or, like,
welcome program organized by NDPP Nagaland. So her name was there and her picture was visible. Any comments on that? We don't have any comment as of now, since NDPP is our alliance partner and will be there as good alliance partner. So we don't have any comment. And so to say, it is almost even if they like to shift their loyalty to other parties, even then there will be an alliance. So we don't have any say to that. Party leaders also, any cabinet MLAs expected to attend tomorrow's? We are very sure that all the state BJP ministers and MLA will be there, led by the Honorable Deputy Chief Minister of Nagaland, Sir Y. Padon, and almost all the leaders of BJP will be there. Since we have already made confirmation, and we are very hopeful that all the big shot of BJP will be there for tomorrow's declaration program. इत्या करने मन हो हॉर्नबिल टीवी आया दिन खान देवी आप दिखान के इन्हें का लेटेस्ट अपडेट्स भी आनी था यो रिपोर्टर के क्रिस्टियन के हुआ कैमरा पर्सन वोंग हॉर्नबिल टीवी दिमापुर Lok Sabha laga opposition leader Rahul Gandhi pra Delhi de event homoy Indian state laga remark dia opode Assam police by fire register krushe. Case to Pan Bazaar police station Guwahati de register hushe under section 152 and 197 clause 1 clause D of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS te complainant do Monjit Jetai ase kun accused krushe ke Rahul Gandhi do free speech laga permissible boundaries to exceed kri ase koigina kuntu public order or national security opor ekta threat ase. Complainant state krushe ke Gandhi laga comment pra tai laga frustration do reflect hoi koigina consecutive electoral defeats karne. It fire file hua de Assam Congress President Bhupen Kumar Bora comment krushe ke Indira Bhavan laga inauguration day Rahul Gandhi pra speech dia de Assam police case register krushe koigina kuntu pra clear ase koi ke police to BJP laga tool ase koigina. Bora krushe ke Congress pra Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma opportunity complaints dishe communal speeches karne हुई भी इत्या भी केस रजिस्टर्ड हुआ ना कोई किना दिल्ली में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्य कार्यालय इंदिरा भवन का इनागुरेशन सेरेमनी में राहुल जी ने जो भाषण दिया था इसको लेकर गुवाहाटी पान बाजार थाना में जो केस असम पुलिस ने रजिस्टर किया है इससे ये पूरा साबित होता है जब पुलिस बीजेपी का हथियार बन चुका है। मैंने खुद हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो कम्युनल बात असेंबली का अंदर बोला था जनसभा में बोला था 3 केस हम लोग ने दिया आज तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन गांधी जी जो 70 मिनट्स का भाषण था राहुल जी का विदिन 70 मिनट्स 9 times Rahul ji spoke about constitution. Rahul ji spoke about Lord Krishna, Mahadev Shiva, Guru Nanak, Buddha Dev, Kabir, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. तो उन लोग का बारे में राहुल जी ने जो भाषण में बताया वो क्या असंवैधानिक है बेआईनी है और राहुल जी क्या बोला था जब मोहन भागवत जो बयान दिया था जब देश का इंडिपेंडेंस राम मंदिर जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन से इंडिपेंडेंस मिला है तो गांधी जी वल्लभ भाई पटेल नेहरू का नेतृत्व में अबुल कलाम आजाद का नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोसु का नेतृत्व में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था जिसमें हजारों कांग्रेस लोगों ने अपना जिंदगी को कुर्बानी किया वो त्याग को आरएसएस भूल गया देश का जो संविधान है वो संविधान को उन लोग इग्नोर करता है इसीलिए राहुल जी ने बोला कि हम लोग देश का जो संविधान प्रदत्त अनुष्ठान है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है
CBI, ED, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, इसका खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ा है, क्योंकि CBI, ED कोई रूलिंग पार्टी का लीडर्स को नहीं देखता है। CBI न्यूट्रल है। तो हिमंत बिश्व शर्मा का खिलाफ जो सारोदा लुइस बाजार का केस था वो क्यों नहीं चल रहा है? पुलिस न्यूट्रल है तो हमारा केस क्यों रजिस्टर नहीं किया? असम में CID, जिस CID ने काफी कांग्रेस लीडर का खिलाफ केस दर्ज किया था, रजिस्टर किया था, जब वो लोग बीजेपी में शामिल हुआ, कांग्रेस एक्स कांग्रेसमैन जो अभी बीजेपी में है, तो केस ऑटोमेटिक बंद हो गया। यही बात राहुल जी ने बोला था, जे CBI, ED, पुलिस, CID, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये बीजेपी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इसको इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए ये स्टेट का जो सिस्टम है, सिस्टम का खिलाफ हमको लड़ना पड़ रहा है। और सेक्शन जो लगाया है 152 BNS, ये 152 BNS सेक्शन क्यों लागू किया था? आर्म्स रिवॉल्यूशन का खिलाफ, देश में जो सशस्त्र संग्राम होता है इसका खिलाफ। ये 197 1D क्यों लगाता है? जो हमारा देश का सार्वभौमत्व पर सवाल करता है, देश का अखंडता पर, देश का एकता पर जो सवाल करता है उसका खिलाफ। इंदिरा जी ने अपना जिंदगी को कुर्बानी दिया स्वदेश और स्वजाति के लिए। देश का अखंडता और एकता के लिए राजीव जी ने अपना जिंदगी को कुर्बानी किया। राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मोहब्बत की दुकान, प्यार का संदेश देने के लिए, भाईचारा का संदेश देने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए जिस आदमी ने 3,500 किलोमीटर पदयात्रा किया, उसको आप देशद्रोही बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है आज इंडिया में। इस कांग्रेस लीडर वी हनुमंता राव खुशी के टू FIR दो RSS चीफ मोहन भागवत और BJP मनु कानकुन कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब अम्बेडकर के इंसल्ट खुशी ताइकान लगा ऊपर फाइल होबले लगे कोई गिना। राव खुशी के कांग्रेस का तेलंगाना दे कंप्लेंट फाइल करबो कोई गिना। फ्रीडम फाइटर्स, देश की आजादी, जेलों को जाके आजादी लाने वालों का बेइज्जती करे, इसके ऊपर केस रजिस्टर होना है। बराबर रजिस्टर हुए तक हम नहीं छोड़ेंगे। असम में आप राहुल गांधी को हर जगह केस लगाते, वो क्या बात बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट सब के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर RSS BJP का योगदान चल रहा, उनके ऊपर मोहर लगा रहे, तो उसके ऊपर भी केस होता। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे वाले का, उनका नाम लेके उनका बेइज्जत, वो केस रजिस्टर नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसके ऊपर लगाना चाहिए। जब तक मोहन भगत नहीं लगाएंगे तो बराबर हम लड़ते रहेंगे। केस रजिस्टर होना चाहिए। जब असम में होता, या तेलंगाना में क्यों नहीं होता? बराबर आज हम जाके कंप्लेंट देंगे। पुलिस रजिस्टर करना, FIR भी करना चाहिए। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। Manipur the security forces can pra 8 firearms or ammunitions can recover cruise. Kangkokpi district de search operation kuriya homoy seize items kan de ekta 7.62 mm sniper rifle, pasta 9 mm pistol logode magazine, duita SBBL gun, duita 36 hand grenade, live round ammunitions, duita stun shell normal, ekta tear smoke shell, chili aro alak articles kan recover होइसे कोइगिना पुलिस पा जुनाइसे। January 16 दिन मणिपुर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस लगा जॉइंट टीम खान लांगकोंग बोस्टी लगा हिल रेंज दे पॉपी डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करिगिना इलीगल पॉपी प्लांटेशन लगा 26 acres डिस्ट्रॉय करिदिसे और इटु दे केस एकटा रजिस्टर्ड होइसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने। मणिपुर लगा हिल और वैली डिस्ट्रिक्ट्स का लगा फ्रिंज और वल्नरेबल एरियाज का सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन खान दो चारिया से लगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स खान दे चेक पॉइंट्स खान भी इंस्टॉल करिगिना से टोटल 106 नाकास दे बोट हिल और वैली खान दे।
Tripura Rural Development Department laga engineer Bimal Das opor fire lushe misappropriation of funds kane kuntu rural areas kane development kam kane allocate kriya hua laga se. Idu formal complaint do block development officer July pari under South Tripura district profile kriya se Poyai Kora police station de station prior to case laga gravity do examine kurigina case to July pari police outpost de transfer kuri dishe. Poyai Kora police station officer in charge OC Bishnu Chandra press ke junaishi ke case to South 2025 laga first case de registered hoishi kurigina aro accused to under section 318 clause 2 BNS aro 316 clause 5 BNS de charge hoishi kuishe. Engineer Bimal Das par allegedly rupees 7,91,699 kundu rural areas kande development kane allocate hoishe. Itu do misuse kuishe aro itu poisa do July pari laga rural development block area laga duta areas kande 7 cattle shed kan construct kurubole laga thakishe kundu bonanai itiabi. Bimal Das opor financial irregularities the allegations kando poila de surface hoi gina ase. Our report suggests create ki Das 200 projects in trust hushe ilibikali pasta project complete kriya se kushe. July pari block join kriya pichide. 10 তারিখে একটা কমপ্লেন পাইছি ভিডিও জুলাইবাড়ির থেকে এখানে 7টা কাজের কথা বলা আছে 7টা ক্যাটেল শেড নির্মাণের কথা ছিল বিভিন্ন জায়গায় এই কাজগুলির দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল করোনা লাগিয়া মানে আইও হিসাবে বিমল দাস টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জুলাইবাড়ি আরডি ব্লক ওনাকে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল উনি কাজটি করছে না কইরা নাকি যে টাকা তুলে নিছে মাল ম্যাটেরিয়াল জাহাজগুলি নয় করছে বলে একটা অভিযোগ করছে ভিডিও জুলাইবাড়ি অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটা কেস নিছি ওইটার ভিত্তিতে যার কেস নাম্বার বাই করা পিএস কেস নাম্বার হচ্ছে 1/2025 সেকশন ছিল 318 ক্লস 2 বিএনএস এবং 316 ক্লস 5 বিএনএস কেসটা রেজিস্টার হওয়ার পরে আমি কেসটা তদন্তবার করার জন্য আইওডিসি এসআই খোকন দাস ওসি জুলাইবাড়ি আউটপোস্ট উনি আপাতত কেসটা তদন্ত করতেছে বাকিটা তদন্ত প্রক্রিয়া করেই আমরা বাকিটা সবটা দিতে পারি স্যার কোন কোন জায়গাতে যে স্টলগুলো নির্মাণ করার কথা ছিল এটা তো স্পেসিফিক তারা লেখছে না এটা তো স্পেসিফিকেশন বলতে এরকমই লেখছে স্বদেশনগরে 5টা কাজ শ্রীকান্তবাড়িতে স্বদেশনগর পঞ্চায়েতের আন্ডারে 5টা কাজ আর শ্রীকান্তবাড়ি ভিলেজের আন্ডারে 3টা কাজ সরি স্বদেশনগর আন্ডারে 4টা কাজ আর শ্রীকান্তবাড়ির আন্ডারে 3টা কাজ স্যার যে অভিযোগটা করা হয়েছে পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়ালের শুধু নাম দেওয়া আছে ওই জায়গার ঠিক আছে নামগুলি দেওয়া আছে কার কার বাড়িতে হইব এই নামগুলি দেওয়া আছে স্যার যে অভিযোগটা করা হয়েছে কত টাকার হ্যাঁ এখানে অভিযোগের মধ্যে একটা টাকার অঙ্ক মেনশন করা আছে এটা হচ্ছে রুপিস 7,91,699 Itiakane manhi sai thegi Hornbill TV.